Hello everyone. So on a request of a lot of students, I've decided to have this mock solving today. So I'm gonna solve a mock live in front of you. This solving is not about मुझे कितना आता है या मैं कितना फास्ट सॉल्व करता हूँ, कैलकुलेशंस कितने फास्ट है, ये उसके बारे में नहीं है. What you have to take away from this mock solving is how I approach the paper. कैसे मैं कौन से क्वेश्चन को लेता हूँ, कौन से क्वेश्चन को छोड़ता हूँ. ऑब्वियसली मैं खुद भी अटकूंगा कहीं पे बिकॉज कोई क्वेश्चन होगा जो मुझे भी नहीं आएगा. देर माइट बी क्वेश्चन जो मैं इग्नोर कर देता हूँ. देर माइट बी क्वेश्चन जहाँ पे मेरी गलती हो जाती है. मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन the same way that it happens with you. I'm no different than you guys. Let's be very clear about it. But I want you to understand what is my strategy throughout the paper. Based on the paper, how do I change my strategy? मैं बीच में से change करता हूँ. I normally end up starting off with the QA section, बाद में VA पे जाता हूँ, LR पे जाता हूँ, बीच बीच में वापस QA आता हूँ, बीच में abstract कर देता हूँ थोड़ा रेस्ट के लिए. तो ये सब चीज़ें मैं चेंज करता रहता हूँ. The strategy is different for each and every mock. मैं अगर कोई और mock test solve करूँगा तो भी उसका सेम होगा. So tell me your experience of looking at this live mock solving because in the past students have really liked it. उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है the way that I solve mocks. वी ऑल्सो हैव लाइक मॉक बडी सेशंस इन आवर कोर्स जिसमें सिर्फ ये मॉक सॉल्विंग नहीं होता है बट उसके मैं एक दो ऐसे सेशंस लेता हूँ क्रैक डेज के कोर्स में जिसमें मैं टफ वाले मॉक सॉल्व करता हूँ एंड आई टीच देम हाउ टू एक्चुअली डू इट ड्यूरिंग द पेपर. अगर पेपर ऐसा आ गया तो क्या करना है. मॉक के बाद एटलीस्ट 3.5-4 घंटे का पूरा एनालिसिस सेशन होता है विच इज वेरी लॉन्ग. हियर आई विल डू अ क्विक एनालिसिस एंड शो यू हाउ दिस द एबीसी एनालिसिस हेल्प मी कि अगले मॉक में मुझे क्या करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज इफ यू गाइज हैव नॉट टेकन दिस मॉक बाय योरसेल्फ प्लीज मेक श्योर दैट तुम पहले खुद से ये मॉक देते हो. फॉर ऑल द पीपल हु डोंट नो कि मॉक कैसे देना है आई विल शो यू हाउ टू टेक इट बाय योरसेल्फ. इफ यू सी एक क्रैकरविटिस का एप्लीकेशन है तुम्हें यहाँ पे तुम होम पे होंगे. तुम्हें टेस्ट में जाना है. टेक द फर्स्ट मॉक टेस्ट. This is free for everybody. You can take this mock test. So before you watch this entire recording of mine, please make sure that तुम ये पूरा mock खुद से दे रहे हो so that तुम्हें पता चले तुमने क्या अलग किया मेरे comparison में. Let's start with it. So I have asked my team. They told me that the topper for this was 154 marks. I guess Chitra is the name of the person who is the topper. I'll try to beat her, but I'm not sure because I'm really out of practice. But let's see, however, that मैं कितना अच्छा score कर सकता हूँ. Regardless. चलो, let's start. Yep. So let's start with the first mock. Start. Find the number of triangles in the figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 8. वापस एक बार काउंट कर लेता हूँ बट एक मिनट एब्स्ट्रैक्ट है मैं बाद में करूंगा ये क्वेश्चन के बाद आई टेक अप एब्स्ट्रैक्ट लेटर. आई विल नॉट डू इट इमीडिएटली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 25 26 27 32. 28 के ऊपर 4 32. 32 से ऊपर कोई नंबर नहीं है. I'll go on to the QA section. A bus travels town A to B at 40 and returns at 60. 40 60. What is the average speed for the bus? 40 60. Distance 120. जाने को 3 आने को 5. Total distance 240. 240 divided by 5 48. Two people having a race 300 meters away. Length of both the cars is 6 meters. Verstappen is traveling at a speed of 216 kilometers per hour. 216 into 5 by 18. 6 into 3, 6 into 36, 3 into 12, 60 meters per second. Find the speed at which Hamilton needs to travel to overtake him just before the apex of the turn. Okay, 300 meter, he has to cover 306 meters. So 306 meters and divided by 60 meters per second. तो इसके पास कितना टाइम बचा हुआ है. अच्छा 300 नहीं, इसको 306 मीटर कवर करना है and this guy will take 5 seconds to cover it. So he has to cover it in 5 seconds. 5 seconds में 306 कवर करना है. तो 5 into 18 by 5. So 5 5 45 25 5 into 6 61.2. 5 into 12.24. 12.24 into 18. 18 180 plus 36 plus 0.2 3.6.
So that is 220 point something. So I'll mark this. 35 these people can do a piece of सब डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ. 21 men 35 women can do a piece of work in 100 days. How many days can 9 men 35 women do the piece of work? Total work is 2100x plus 3500y 935. अच्छा और दिया हुआ है, सॉरी. 21x is equal to 35y, तो x by y is equal to 7 into 5 by 3. The total work is 21,333 5 21 into 5 10500. 9 men and 35 women. 9 men will be 45. 35 women, 35 into 3 105 150. 15 into 7. Answer is 70. Oh my god, बड़ा कैलकुलेशन है. I'll definitely do this question, पर ये बाद में करूंगा मैं. Team of 5 chefs is hired to prepare a meal for a good wedding. They can complete the preparation in a certain number of days. 6 more chefs are added to the team. The job can be done in 20% fewer days. Okay. So 5 is to 6 is 6 का difference. So this is 36 people. This is 30 chefs. On the other hand, if 30% of the chefs are unavailable, it will take 15 days extra. How many chefs would require to complete the work in exactly 25 days? Okay, ठीक है. ये यहाँ पे 20% लेसर डेज लगेगा. इफ 30% शेफ्स आर अनअवेलेबल, मतलब अगर 1.5 3.5 शेफ्स है, they will take 15 extra days. So this will become 5 is to 3.5, that is 10 is to 7. So 3 is equal to 15. So 1 is equal to 5, and this will be 50 days. This will be 35 days. तो 5 शेफ्स टेक 35 days to finish. तो काम कितना है? 5 into 35 150 175. 175 का टोटल वर्क है. हाउ मेनी शेफ्स आर रिक्वायर्ड टू डू दिस? तो 25 into 7. हाँ तो एक मिनट 7. अच्छा 535 7. इफ 5 is equal to 30 then 7 will be is equal to 6 42. नहीं, मेरा फिर तो गलती हुआ. Just a minute. I didn't write till how many chefs would require to complete the work in exactly 25 days. 5 is to 30% absent है. तो अगर 30 people and 21 people, the number of days, so obviously the number of days will be 30 is to 21. The difference is 9. 9 is equal to 15. If 9 is equal to 15, then 30 will be equal to so 3 is equal to 5. So this will be 50 days. So these people will take 35 days. 30 people into 35 is the task. मुझे 25 days में खत्म करना है. 5 into 6 5 into 6. नो 42 ही आ रहा है. तो ठीक है, चलो, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक समवेयर. आई लीव दिस फॉर लेटर, बट करके फायदा नहीं. आई जस्ट मार्क दिस एंड मूव अहेड. Funny amount compound interest 5,000 3 years 10% per annum compounded annually. तो 1.335 हो जाएगा. 1335 1331 into 5 5 5 1 6 1 5 6 6 5 5. Harish divides 2602 between his two sons Ram and Ranjit. So the amount of Ranjit after 9 years is equal to the amount of Raman after 7 years. Amount of Ranjit after 9 is equal to Raman after 7 years. Okay. So x square 4%. 4% is 26 by 25. So 26 by 25 is 26 square by 625. 25 square 625 650 676. 676 by 625. इनका टोटल बन जाएगा 25 0 0 1 1 1 3 0 1 1 3 0 2. इसका डबल. सो दिस गाय विल गेट
um, 1352, and this will get 1250. 1352, 1250 answer. Nine. हाँ बराबर है. Mixture contains alcohol and water in the ratio 7:3. After adding 10 liters of water, the ratio becomes 7:5. तो 7 same रहेगा. 2 is equal to 5. So that is 10. 10, 2 into 2 is equal to 5. So 10 is equal to into 2.5, 25. Original quantity 25. Original quantity of alcohol in the mixture into 2.5 हो रहा है. तो 14. टू से ऐड हो रहा है तो 10 is equal to 50. 35. not a solvent. एक्स 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 प्लस 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 इसका माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस आ जाएगा. आई जस्ट बाय डिफॉल्ट से दैट रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड. प्लस माइनस, आई नॉट वेस्ट टाइम हियर. अगेन अगेन. ऐसा आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा. अगेन रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड. प्रोबेबिलिटी बाद में करेंगे, नॉट माई स्ट्रॉन्गेस्ट सूट. Bit later. A number divided by 132 leaves a remainder of 85. Okay, 132x plus 85. The same number divided by 12 leaves a remainder equal to the remainder of when division by 132 is divided by 12. Remainder from, okay, so remainder from the division by 132 is divided by 12. तो 85 divided by 12, 1 का रिमाइंडर बचेगा. अच्छा 12x plus 1 है पर 132x plus 85 है. और the remainder when the same number is divided by 33. 12x plus 1 से कर लेता हूँ. 25, 37, 49, 61, 73. 33 से हमको डिवाइड कर देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन बैठता है. यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 33, 66, 66 minus 5, 33 minus 5, 28, and 36, 72, 36, 66, 66 के साथ बाद में 7 बचेगा. दिस इज द क्लोजेस्ट वन. आई मार्क दिस. 73 नहीं ही आएगा. आई जस्ट ब्रिंग इट. ठीक है, कौन इतना सॉल्व करेगा. अगर जरूरत पड़ी तो वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे. रॉन्ग नंबर इन द सीरीज इंटू 3 plus 3 इंटू, नहीं, 2 cube, 3 cube, 5 cube, 7 cube. This is not a cube. 739. ओके, सॉल्व करना ही पड़ेगा. 5/8 इंटू 96, 12, 5, 60, 28.57, that is 14.28 का डबल, that is 2/7, 2/7, 222. 83.33%, that is 16.66 minus कर दिया, that is 5/6, 5/6 of 48, 6, 8, 40. 37.5%, 3/8, 3/8, 8 into 8, 8 into 3, 24.
66.66%, two third of 45 is 30. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10 + 4, 14, 14, 176. Now this. The circumference of a circle with radius 14 is equal to the perimeter of a rectangle if the length and breadth of the rectangle. Breadth of the rectangle, okay. Circumference is the same, so 2 pi r. 2 into 22 by 7 into 14. यहाँ पे आ गया 2, 2, 2, 2, 4, 4, 88. 88 is the perimeter and the perimeter is 2 L into L plus B. But is 4 centimeter less, so L plus L minus 4, 2. So that is 2. 4L minus 8 is equal to 88. L is equal to 88, 96, 96 by 4, 24. 24 into 20, 480. ये आना चाहिए. Triangle PQR, PQ is equal to QR is equal to PR. Equilateral, the ratio of the radius of the inner circle to that of the circumference is circumcircle, sorry. Yeah, that'll be 2:1, क्योंकि सेंट्रॉइड ही बनता है इसमें. What is the mark price of the shirt? How many questions I'm done with? I'm done with 14, 14 and 14 minutes. Okay. Going at 1 mpm, Koya section, बराबर है. Shopkeeper purchases 2 same shirts for 11,000 and earns rupees 275 per shirt after giving a 23% discount. Do the question है. The average temperature of Delhi in the first 4 days of June 2017 was 52 degrees. The average of the second, third, and fourth and the fifth day was okay. 2, 3, 4, 5 was 55, 52, 208, 220. 5:7. The difference is 12. 12 का difference, the ratio is 5:7. 2, 2, 2 is equal to 6. 2 is equal to 12. 1 is equal to 6. यहाँ आ गया 30 and ये आ गया 42. Okay. If this is 30, this is 208, so this will be 178. If this is 42, again 178. Perfect है. हाँ 42. Very good answer. 5 friends ABCD, weight of A is equal to the average weight of BCD and weight of B is equal to the average weight of ACD. Three A is equal to B plus C plus D. 3B is equal to E plus C plus D. AC is equal to the average weight of CD. AC is equal to CD. E is 30 kg heavier than C. Okay. तो A is equal to D हो जाएगा. ADC. ओके ठीक है. E is equal to 30 plus C. Average weight of B and D is 60 kg. इनका टोटल 120 हो जाएगा. ओके. B plus D is equal to 120. What are the average weight in kgs of A, B, C, D and E? Okay. A, B, C, D. C and D. E is 30 kg heavier than C. Average weight इनका निकालना है. The average weight of BD is 60 kg. तो BD 120 हो जाएगा. CD.
A is equal to D है. Divided by 5 निकालना. So this is C plus 30. C का वजन नहीं पता है. B D का 120 है. A C D 3A is equal to B C D by 3. तो C by 3 plus 40 plus 120 plus C plus 30. Three, 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 70, 70, 190. 193, 3, 3, 6, 9, 70 by 3 plus 190. इसका डिवाइड बाय 5 करना है. और ठीक है, बाद में करेंगे इसको. But I'll come back to this question for sure. इसका वर्किंग को छोड़ देते हैं. The ratio of a man's age to his mother's age is 4:5, and the ratio of his age to his daughter's age is 6:1. Man, mother, and daughter. 4:5, 6:1, 6, 24, 24, 4 into 6. ये आ जाएगा 30. ये 614. 4 is ago these ratios were 11:14 and okay, 24 minutes. 30x minus 4 is equal to 11 by 14. So I'll get x का value, या फिर 6x minus 4 and x minus 4 is equal to 11 by 1. तो 6x minus 4 is equal to 11x minus 44. यहाँ पे 44 आ जाएगा. 5x, x is equal to 8. तो बच्चे 8 साल की है, तो इनका डबल डबल कर दो. 48, 60 and the kid is 8 years old. The ratio of the age of grandmother to granddaughter 12 years from now will be 72, 72 by 20. 18 by 5. अरे रे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा. थोड़ा I have to delete everything. Okay, चलो let's move ahead. log a 5 2 2 log a 3 log a 4 log a 1 2 3 4. 10 log a is equal to 10. तो log a log 5 to the base a is equal to 1. So that is 5 to base 5 is 1. 5. 3 5 log 2 and minus 2 log 2. तो बाद में करेंगे. 4 men 6 men form a committee of 5 members with at least 2 women in how many ways? At least 2 women. Probability और permutations combinations ये करूंगा मैं बाद में. A B start from two stations 360 kilometers apart at the same time.
ओके, हम हाफ द सेक्शन, काफ़ी टाइम चला गया है. Same time travel towards each other, A travels at uniform speed. B starts 1 hour later than A and travels 30 kilometers faster than A. The two trains meet 4 hours after B starts. What is the speed of train? 8 kilometers, अच्छा 30 kilometers faster than A. 1 घंटे बाद चालू करता है. 4 hours after, तो A travels for 5 hours, B travels for 4 hours. The total distance traveled will be 360 is equal to 5 into A plus 4 into A plus 30. 5A 9A plus 120 यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा, तो 40 इज इक्वल टू 9A. Respect of A is equal to 240 by 9. 9 into 2, 18, 86, 6.66666, 26.67. For employees come to a different application. Okay, DI set. Let's see क्या दिया हुआ है. P number of Zomato using no application is 2:3. Okay. To Zomato, uh, 2:3, 5, 35, 25, 25, 25, 10 and 15. 10 and 15 total. So I'll just make this table by myself here again. So company P, Q, R, and S. There is Swiggy, Zomato, Food Panda total. 1000, 10, 25, 25, 75. So everything is 250, 250. So everything is multiplied by 10. That is 350, 100. And ये नो भी लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल. यहाँ पे नो विल बी 150 एंड यहाँ पे 40. यहाँ पे 48, 48, 32, 32, 1300, 48 into 13, 48, 13, 480, 480 plus 120, 600, 600 plus, नहीं नहीं, 480, तो 600 plus 24, 6240, 624, 32, 32, 3, 390, 390 plus 26, 416. In company, the number of users using Food Panda and using no application is 10:3. 10:3, 13. यहाँ पे ये 1300 है. 13 ये 13 इंटू कितना, छोड़ो. 260 कितना बच रहा है. 260, 10:3, 13 into 20, 260. In company are the number of users making. Okay, चाहिए क्या. Zomato company Q&R approximately what percentage of the food panda user. Okay, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा. Number of users using Swiggy and the users using no application 3:1. In company are Swiggy to no application 3:1, 60, 40, 40, 15, 45, 45, 45, 15, 45 into 16. That is 180, 180 का 180 into 4, 720. 35 into 35 into 16, 35, 16, 35 into 2, 70, 70, 70 into 80, 560, 25, 400, and 15, 15, 16 to 25 to 40. Let's just sum up and figure out if I'm going right. नहीं, किधर तो कुछ प्रॉब्लम किया है. 45, 45, 45, 15% है. 35, 20% है. So this is 60, that is 40. That is where I made a mistake. 30%, तो 480 हो जाएगा. And 30 and 10%, 160.
480, 880, 880 plus 120, 1000 plus 1000 plus 600, 1600 बराबर है. And the company as uses Swiggy, Zomato, and the users no application are 232. Swiggy, Zomato, and no application are 2, 3, and 2. So 30, 70, 70, 70, 20, 30, 20, 20, 300, 3900, नहीं 20, 450. ये तो ऑलरेडी 3450 पता है. एंड दिस विल ऑल्सो बी 300, 900, 600, 1500. परफेक्ट. ठीक है. Zomato uses in company Q and R are approximately what percent? Q and R 444. 976 is what percentage of more than Food Panda users in company P and Q together? Food Panda users 240. डर लग रहा है इसमें. P and Q together. कुछ तो मैंने इसमें प्रॉब्लम किया है. वाह ये 400 है ना. तो 600. 600 से 376 by 6 60 62 63% approximately. 7 next. Find the difference between total number of Swiggy users in all companies with total number of Zomato users in all companies together. Swiggy in all companies, Zomato in all company. ओके सबका टोटल करना पड़ेगा. ये आ जाएगा 4. ये आ जाएगा 4. यहाँ आ जाएगा एंड में 6. और जो डिफरेंस ही निकालना है ना. हाँ तो डिफरेंस ही था. इनका डिफरेंस निकाल के ही कर देता हूँ. 250, 624, 224, 208, 480, 560. इसमें से -120 हो जाएगा. नहीं -80. ये 450 -150. सो -230 करना है. 20, 22, 28. Other issue of Food Panda and Swiggy users in the company are together. Food Panda and Swiggy 880. ये भी कैंसिल करो. Swiggy and Zomato users in company P 88 to 45 ही होना चाहिए. Total number of employees using Swiggy and employees using no application together. Swiggy and no application 500. First order वेरिएंस नीचे वाला. Six 24, 684, 483, 640, 600. 4 एंड में ये एक में यार. Number of Zomato users is how much more or less than the total number of Food Panda users? Zomato, Food Panda. इनका टोटल निकालना पड़ेगा. 516, 1076, 1476, 1476, 1526. ओके डिफरेंस ही निकालना है ना तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ. चलो ये कर ही दिया है तो ठीक है. 600, 600, 1000, 1450. 36. Good enough time. 23, 23 answered in the okay. मेरा इधर MPM कम हो रहा है. I'll switch over to the next section. टाइम मिला तो वापस इस पे आऊंगा. Friends. ओके सेट अराउंड सर्कुलर टेबल. फैमिली ट्री के साथ ये कंबाइंड है. और ये मैं करूंगा बाद में. आई विल डू दिस मच लेटर अगर टाइम मिला तो.
Triangular table facing toward the center. I will solve this. Arjun is married to Priya. Hmm. Arjun is married to Priya. Meera is the sister of Arjun. Priya is the daughter-in-law of Ramesh. Kabir is the brother-in-law of Arjun. Tara is Arjun's daughter. Ramesh is the father-in-law of Kabir. Suresh is married to Ramesh. And they have two children. How are Meera related to Priya? Meera is sister-in-law. अरे ये तो पहले ही पता था यार, क्यों खाली फोकट में इतना किया? Pointing to a lady on the platform, Puneet said she's the sister of the father of my mother's son. My mother's son is me. My mother's son father मेरे पापा की बहन, तो वो मेरी आंट हुई. In a code language, this. Which of the following is true? तीनों एक दूसरे की बहन है. T is the daughter of Q. All stars are bright, all bright are beautiful. All have to be so also just a minute. Neither. If all the symbols and numbers are dropped from the sequence, what will be the second alphabet from the left or the seventh alphabet from the right? And seventh alphabet from the left, right, second alphabet to the left, ninth alphabet from the right. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E. So the following is 7 to the right of the 18th from the left end. 25, 20, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Up 18 from the right. Sorry, ये मिल गया. Certain language instruction is written as okay. What will be the code for reconstructing the scene? Uh, plus 2 minus 2 PQRSTU plus 2 RT R plus 2 U minus 2 STU बराबर है. प्लस टू माइनस टू वाला लॉजिक चल रहा है. TCD I'll check the third one. प्लस टू माइनस टू E प्लस टू. ये कैंसिल, ये तीनों में से एक होगा, बट आई हैव टू चेक ऑल ऑफ देम. वाओ. तो I'll first just write it down. STACE MOP C TCE MPR. पर none of these भी है तो करना ही पड़ेगा. O EQR V W A V G Q
L TCEMPRB also Q TCEMPQ VP PQVP GQL. Important is that has 126. अगर पेपर के स्टार्ट में वो ABCD लिख दिया होता तो बहुत फायदा हो जाता है एल एल तो 80 plus 28 108 108 126 ओके सबका एडिशन है परफेक्ट प्रेसिडेंट भी रिटन एज एलिमेंट ओ पी 5 19 9 4 5 14 20 um 20 34 34 38 38 43 43 52 52 62 62 71 71 76 76 86 86 94 94 110 माय गॉड होपफुली सही है कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं किया so is equal to 112 26 26 plus 14 14 26 plus 15 40 40 56 56 का डबल नहीं 54 that will be equal to LMN 15 15 15 15 plus 26 30 30 30 plus 56 56 का डबल at okay ACT 1 3 20 4 20 24 24 का डबल R 18 18 plus 1 19 19 plus 20 39 39 into 2 my god 39 to 2 नहीं जम रहा है 78 crazy 134 मीन्स ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग 478 ओके ब्यूटीफुल दो बार है उस 4 दो बार आया है ठीक है डिजिट्स फॉर सी तो जो कॉमन नहीं है वो निकाल देता हूँ 4 है 7 है 8 रोज इज कैलकुलेटेड एज दिस चेयर इज एज दिस CHAIR इज 117 तो नहीं चल रहा है ओ R is 6 preach is only okay SEARCH R is 6 4 एंड में 6 ये आ सकता है cannot be determined तो नहीं है so this is definitely the answer conclusion okay R और P का relationship cannot be determined E and K का relationship A is less तो only B follows PL का relationship P is less than L बराबर है S greater than M S M का नहीं बोल सकते only one follows I hate this इसके कितने हैं 1 2 3 हाँ 2 3 okay I will do this is either equal to or greater than dollar equal to or smaller than hash
TAPB, ओके TAB एंड S बीच में घुसा है। S और B के बीच में 8, 8 जीतेगा। B इज राइट, नहीं B इज राइट। AZHPZ, तो AZP एंड H का उल्टा हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो AZPH डॉलर स्टार, okay, only star wins wherever AH. A से H तो लाइन में जा रहा है, तो ये कैंसिल। A स्टार P, यस B फॉलोज। A B, A B P B P R, अच्छा A B B P करना पड़ेगा। A at B, B at P and P at R. Okay, everything is at का रिलेशनशिप। अगर A B P R गए तो A C P 1 follows। A B P R P R A at का रिलेशन R से उल्टा आ रहा है, तो यस बोथ फॉलो, ऑप्शन ए। 15 at 120 lines are just getting arranged 38 45 45 45 63 63। ओके, यहाँ पे एक अरेंज हुआ, यहाँ पे दूसरा हुआ, नहीं। ओके, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। स्टेप 3 फॉर द इनपुट, 3 अरेंज हो जाएंगे। 21 36 65 90 129 58 170। 21 36 65 90 129 129 46 58 and 170, perfect। Only the last step for the input, the last step will be ascending order। How many steps will required for getting the final outputs for the following output? How many steps required? 1 2, okay, let's just do it। मैं इसको कर देता हूँ वैसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 and 10। okay, 1 सब लाइन से जाएगा। 1 8, यहाँ पे आ जाएगा 7 4 3 5 2 10 9 and 6 1 2 7 4, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 7 4 3 5 10 9 6 8 4 5 10 9 6
वन। ओह नहीं, यहाँ पे 10 जाएगा। ओ माय गॉड, व्हाट एम आई डूइंग। 10 की जगह पे 12 7 4 3 5 1 9 10 12 8 का 8 7 4 3 5। एक मिशन है। 6 एंड में था। 6 यहाँ पे 9 जाएगा। 6 9 10 1 2 3 7 4 5। हाँ यहाँ पे 8 5 6 9 10। टाइम लग गया इसको, बहुत ज्यादा टाइम लगा। है क्वेश्चन को इतना लगना नहीं चाहिए था। ओनली थर्ड स्टेप ऑफ द आउटपुट। ओके 21। 3 ऑर्डर में है, बाकी सब जगह पे है, तो 21 55 एंड 159 विल बी। 21 46 एंड 159। 21 46 159 दे आर इन ऑर्डर। 69 55 121 76। Yep. Fifth step of the output with the third step cannot be determined. Much of the process that will be simple the performance. Hmm. Some course the students can't say. Some students are workshops. Yes. Some attend exam courses. Yes. All workshops are two. No, only 2 and 3. All, uh, all good cricket players in the England cricket team. Z is not a good player. Z is not in the English cricket. One for us. Should live in the big ceiling pink. No, इसमें एक ही क्वेश्चन लिखे। हाँ एक ही क्वेश्चन है। आई गॉट सो हैप्पी। It does not listen to see pink house is exactly to the orange and brown house. Okay, pink, orange, brown. Uh, purple. Uh, some Serie A are EPL. S. All World Cup are Serie A. Okay. All World Cup Latica, no. Some World Cup are Latica, no. Some Latica are Serie A, yes. All the Latica, no. Only 3 follows. Hmm. Oh.
ये वाला है, I'll do this later, definitely I'll do this later. हम्म, कॉमर्स ग्रेजुएट में से ओके, इसके कितने क्वेश्चन है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। ओके, पांच क्वेश्चन है, लेट्स डू इट. कॉमर्स चाहिए 60 ICWA कंडीशनल क्वालिफिकेशंस. 10 years supervisory should not be more than 40. ओके, बहुत सारे कंडीशंस है. पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स 60%. In graduation, birthday is 1955. 1, 2, 3. डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है. 1993, 40, 40, 40, तो मैक्स 53 बॉर्न हो सकता है. शुड नॉट बी मोर देन 40. 53, 53 के बाद हुआ, पैदा हुआ. She is fluent in Hindi and English, has got her ICWA certificate, has been working as a supervisor in a large pharmaceutical company for the last 12 years. CA ICWA है, एज है 60% है, सिलेक्टेड. कॉमर्स ग्रेजुएट सेकंड क्लास, ही वाज. सेकंड क्लास का मतलब नहीं दिया हुआ है. डेटा इनकम्प्लीट, आई रिजेक्ट. उप्स, मैंने गलती किया. इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, तो मैंने सिलेक्टेड सिलेक्ट करना है, नॉट टू बी सिलेक्टेड. MBA with first class commerce degree, has been working deputy manager since 81, 93. 13 साल का एक्सपीरियंस है. ही इज फ्लुएंट, ही वाज बोर्न इन 52. नहीं चलेगा, रिजेक्टेड. Commerce graduate 72%. He has been working as supervisor since 79, 79, 93. 13 years, 14 years, 42 years of age and is fluent. 42 years of age होना चाहिए. कितना? कैंसर ना, डायरेक्ट रिजेक्ट. Working as general accountant in the same company since 1970. He's got CA in commerce in the first class. He's fluent in English, Hindi. 37 years old है, जनरल अकाउंटेंट सिंस 78. 15 साल का एक्सपीरियंस है. CA है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, फर्स्ट क्लास है, इंग्लिश हिंदी है, सब कुछ है, सिलेक्टेड. कोई आड़े तड़े नहीं आया, अच्छा है. अर्ली स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन. वॉकिंग टुवर्ड्स वन मॉर्निंग तो वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट. नॉट. It's walking north, takes a right, reaches a crossing, there's a club straight ahead, and hospital to the right. Hospital. Lena takes a dog on a walk. They walk towards the sun, take a right turn, left. Mother of X is the mother of Y. Y has two children, P and Q. Z is the father of R, who is married to P. S is the brother of X.
T is versus T dot wave. Use map to T. Is this enough view? We related to Q cousin. यार मुझे लगा इतना करने के लिए दो तीन सवाल होंगे. The parrots owls. What's parrots? Parrots. Around the sparrows. Some dogs may be owls. Some parrots may be hawks. The sparrows are owls. Two, three. Some painters are not writers. No artist is a writer. Some sculptors are not readers. Or let us be readers is a possibility. Possibility. Oh, sorry. मैं गलत पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ. All artists are painters. Some painters are sculptors. No sculptor is a writer. All writers are readers. Some painters are not writers. Yes. No artist is a writer. Can't say. Some sculptors are not readers. No. Can't say. All artists being readers is a possibility. Yes. 1 and 4. Some tracks are tunnels. No tunnel is a tunnel. All tracks are tunnels. Some tunnels are tunnels. All tracks are trains. Some tracks are not trains. And like 1 and 3 puzzle है. All are coconut. All coconut also. All looks are sambar. Coconut are sambar. All looks are all bada are sambar. 1 3. It is left of C but to the right of G. G to the south of J. J to the south of Y. Y to the west of W. C to the east of Y. Southeast. North. Hmm.
हम्म, कौन सा कौन सा दर्द है बारे में लेट्स अब थोड़ा थकान लग रहा है I'll go to वर्बल थोड़ी जिंदगी जिंदगी को कर लेता हूँ लेट्स नॉट ओके let's start with this. AI is rapidly advancing field with potential to dash various aspects of our life. Affect वाला कुछ है revolutionize from healthcare to transportation. AI technologies are being integrated to dash efficiency and accuracy, enhance the field of dashing. Hmm. This is tough. Option B also I'm not sure, but already ताल बाद में दिया है तो फिर यहाँ पे टेम्पो आना चाहिए. ताल तो नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा. Technical viewers also emphasize the emotional expression and dash between the performer and the audience. Connection, synergy, resonance. Connection, I guess. Synergy भी आ सकता है, but connection I feel it fits best. Melodic frameworks known as ragas evoke specific modes and evoke a sense of dash. Ooh, सारे हो सकता है. Serenity, best fit हो रहा है. Together with this political ideals, so this is more difficult than I expected, or I'm terribly out of practice. That probably is the bigger reason. तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. Yeah, mainstream narrative that lives. इसके 40 हुए हैं. 40, 10, 50, 50 and 23, 73, 73 in 60, 67 minutes. Oh, not bad. I thought I'm going very slow, पर मैं तो अच्छा खासा जा रहा हूँ यार. Wow. Political is the which captured many of the radical worldviews. So, much of the radical worldview in the late 18th century. Price's body of work. ये वाला है. Just as I approached the counter to place my coffee order, the barista said, "We have run milk, out of milk to like a black coffee."
Said, we have run out of the milk. We have run out of milk. ये ये ही हो सकता है. I love how they had done this. Was like very Gen Z language. Choose the word which is closest in meaning to the word a bit. A bit is too complicated. A prolong, I would say. Okay, prolong. The disputation terms decided to the disputatious team, I love the word, decided to come to a compromise and resolve their internal issues cordially. Come to a so actually we got to come to a compromise. Everybody's got addiction. That's what Dr. Jude Brewer feels. He says on a very basic level, we are probably all addicted to something on one level or another. There is no mistake. Get the antonym of the word prudent. Prudent मतलब बहुत ध्यान रखता है. Reckless नहीं. Yep. She was very tired as she was working since had been working since yes had been working since 7 a.m. Okay. पैराजम्बल 3 वाला है. उसको करूंगा सॉल्व बट बाद में. इंग्लिश के लिए आई जस्ट मेक दिस अ लिटिल बिगर सो आई कैन सी बेटर. तुम लोगों को ये टेंशन नहीं है बिकॉज वेल इधर क्या हुआ. अच्छा. पर्सपिक्यूस. Speakers. Yeah, I'll just mark obscure and move in. Despite the startup's impressive early traction, the board warned that without a clear path to profitability, the current valuation was largely dash and could collapse at the first hint of market volatility. Illusion. The motor car is one of the useful goods of modern science. One of these is the smoke and pollution it creates. Hazard is fast and comfortable. BDAC. Sisha worked in a bustling office in the heart of the city. She loved her job and was eager to take on new challenges and projects. To combat the pressure, she began to practice mindfulness and meditation. Taking a few minutes each day, she was able to stay focused and productive even when the workload was heavy. Found this practicing meditation, the workload she found getting drained and exhausted. CAECA. ECADB बराबर है. So the word is closest in meaning to the word obstinate. Closest in meaning, na stubborn.
Anton Goma when somebody opened the door to his home, backwards of right, 1A, 1A, 2E, 3D. नहीं, none of these है तो करना ही पड़ेगा, छोड़ो. He glanced at the front of कौन 1A 2E बराबर है AE. Hearts on the flower he planted just yesterday. Amidst throng. D. AEDCB, AEDCB, EDCB. Answer option. Yeah. The quarterly review, the investors cautioned that the company's apparent profitability was a part of result of aggressive accounting choices that tended to dash short-term earnings while masking deeper structural weaknesses. CPU operating motherboard display RAM display operating system भी हो सकता है. All of these are physical parts, but all of these are a part of the processing unit. Okay, OS. Okay, summary वाला है. Psychology is different temperament as individual differences in dash as well as in self-regulation. More than one of the above. Hmm. It's like fine wine. And I find myself involuntarily pausing before coffee warehouses and bringing up the rear of every funeral. The more I solve this paper, the more I'm gaining respect for the topper, जिसको 154 आया. This is by no way an easy one. इसमें टफ तो जाता था. Spirit for pistol and ball, the philosophy. Peace. What does the narrator choose to go to the sea?
that it was strong or principles to prevent me from deliberating steps into the student without making people have thought in account. At high time to go to the sea as soon as I can. The system professional involved. Hmm. Okay, ठीक है. We can go to see even school. Where for friends learning that is into what is relate to their mental state. Okay. Narrative mean when they mention Carter the relationship to the decisions. With the philosophical flourish, Carter throws himself upon his sword. I quietly take to the ship. Okay. Oh, this is a tough one. छोटा सा RC है, but the language is not so simple. Oh, language is not so simple. What insight does the narrator offer about people's feeling towards the ocean? Whenever I find myself in the middle of ocean, hmm. What does the narrator mean when he describes going to the sea as a substitute for pistol and ball? For adventure and excitement. Yes. One, two, three, four, five. ओके वो आरसी करूंगा मैं. लेट मी फिनिश द सेक्शन. इसके बाद वापस मैं यही 39 पे आऊंगा. Select the word most similar in meaning to the given word. Obstreperous, boisterous, as far as I know. In today's hyper-competitive market, a manager who fails to dash customer data uh, risks making decisions based on intuition rather than evidence. Collate, fabricate, disseminate, abdicate, extrapolate, which can seriously undermine long-term growth. Extrapolate. Yes. While the campaign generated enormous visibility, critics argued that the brand messaging was so dashed that the consumers remembered the spectacle but failed to grasp what the company actually stood for. Oh my god. सारे words difficult है. Didactic. Faced with slowing demand, the CEO warned that any further delay in cutting non-essential expenses would dash the firm's already fragile cash position, exacerbate, and force it to emergency. Option B, Bombay. Uh, Another.
Select the word most opposite in meaning to the given word. Antonym. Only one option is correct. Intransigent. Oh my god, इसके unyielding. In the strategy meeting, the consultant warned that relying solely on historical sales data to predict consumer demand in such a volatile market would be dangerously dash and could lull the company into false sense of insecurity. Myopic. मतलब मायोपिक मतलब सिर्फ नजदीक का देख सकते हैं. Hmm. New policy claimed to empower junior managers, but in practice it merely dashed their authority, leaving all meaningful decisions concentrated at the top. Disseminated. Identify the grammatically correct. The art gallery displayed beautiful paintings. The art gallery displayed beautiful paintings. Okay. Displayed beautiful paintings. This. ओके मेरा अच्छा खासा मतलब इंग्लिश मेरा ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व हो गया है एंड इन अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. पैराग्राफ वन. ओके. Relative James had a trusted partners by his side. Officer Smith C से चालू होगा. Formidable team, each complementing each other's skills and decisions. They collaborated their breakthroughs and led to navigate the city's underbelly with courage amidst the dangers and uncertainty. Their friendship remained unwavering. CBAD. Detective James never rested, always seeking the truth in face of adversity. His dedication to his craft and unwavering pursuit led to continue to unravel mysteries, leaving no stone unturned. जी नहीं तो ई स्टार्ट में आएगा बट उसके बाद कुछ और आएगा. जी और ई विल स्टार्ट इट एंड एच विल एंड इट. जी और ई विल स्टार्ट इट एंड एच विल एंड इट बट जी के बाद ई नहीं आ सकता. आंसर आई मार्क इज नन ऑफ दिस. पैराग्राफ थ्री. जे शुड एंड इट. जे पे खत्म होगा. एल के आई जे लेट्स ट्राई. Jim sat in his office surrounded by stacks of files and a map of the city. With a magnifying glass in hand, he examined the clues with a keen eye for detail. Every case presented a new puzzle, fueling his insatiable curse, curiosity and passion for justice. His reputation as a brilliant detective spread. हाँ एल के आई चल जाएगा. फोर्टी फोर. कितना बचा है? 17, 31. 31 plus 23. 54. 54 plus 24. 16. ओके एब्स्ट्रैक्ट पे वर्बल खत्म करके एब्स्ट्रैक्ट पे जाऊंगा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. हाउ डिड कलर कोरल एक्सेस तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. ओके. कोरल के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा है. व्हाई इज इट अ हिट कलर पूछा है. यूनिक वार्म टोन एंड वाइब्रेंट यू अनराइवल्ड कलर. व्हाट डज द वर्ड अनपैरेलल्ड. ये तो वोकैबुलरी है. कलर इवोक.
Okay, cool is divisive. Okay, rarely divisive. Strongly associated. Okay, lifestyle. ओके ठीक है हो गया इवोक फीलिंग्स ऑफ प्लेसिडिटी हाँ मतलब शांति शांति होता है इससे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस लकी कलर फॉर सेंचुरीज टैलिस्मैन नई नई विक्टोरियंस प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन ठीक है चल जाएगा वाइज हेड कलर इट हैरोइंग तो नहीं है तो ऑप्शन ए कैंसिल ए कैंसिल इन दोनों में से कोई हो सकता है डी चेक कर लेता हूँ इट द वर्स्ट ऑप्शन सी इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा लेट्स गो योर अगेन genuinely tough paper I hope all of you have taken this paper it's not an easy one मतलब अच्छा खासा पेपर है six members are there in a family two generations there are three married couples in family how is T related to B okay ओके ये भी करूंगा मैं वो डेफिनेटली करूंगा मैं The leaders of a miners union strike against. Now, I want you guys to notice how मैं एक section पे टिक के नहीं रह रहा हूँ. I'm continuously changing sections because the mind gets tired of doing the same thing over and over again. थकान लगती है and you just cannot keep doing the same thing over and over. तो पूरा section खत्म करने के पीछे मत भागना एज आई टोल्ड यू दैट कॉन्ट्स वाज टफ मेरा एमपीए उसमें स्टार्ट में अच्छा जा रहा था बाद में कम जा रहा था आई इमीडिएटली स्विच्ड ऑन टू समथिंग एल्स वर्बल आई फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया पूरा ऑलमोस्ट पूरा मेरा खत्म हो गया है हाँ मतलब मेरा पूरा ही खत्म हो गया है एंड मार्क फॉर तो नहीं है ठीक है तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे मेरे काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं बिकॉज आई नो दैट इसमें भी ज़्यादा टाइम लग रहा है क्यूए भी बहुत टाइम खा रहा है मेरा सो आई केप देम फॉर लेटर जो जो क्वेश्चंस टाइम कंज्यूम मैं उनको बाद के लिए रखता हूँ एटलीस्ट आई नो दैट आई एम गेटिंग अ फ्यू गुड मार्क्स आई वुड से दैट यहाँ पे मुझे 49 90 90 123 123 क्वेश्चंस मेरे हो चुके 124 क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट का एक गिन के मेरे हो चुका है विद इन 90 मिनट्स दैट इज हाउ इट इज फॉर द क्रैकेड स्टूडेंट्स तुम्हें पता है मैंने स्ट्रैटेजी बताया है 90 मिनट्स डेढ़ घंटे में 120 क्वेश्चंस मतलब आई एम एट अ वेरी गुड इनफ टाइम मेरा एमपीएम बहुत अच्छा जा रहा है दिस इज एग्जैक्टली एज पर द स्ट्रैटेजी दैट आई टेल यू या आई वाज हियर आई एम सॉरी management co are company addition measures to pressure the company to accept union's contract proposal. Union leaders are considered as their principal new tactic, a consumer boycott against gas stations which are owned by Energy Incorporated, the same company that owns Coalco. Okay. Least directly relevant to the union leaders' consideration of whether attempting a boycott will lead to acceptance of contract proposal.
That's uh, eight friends, two opposite rows, चार चार सामने सामने है, लेट्स डू इट, ये इजी है, हो जाएगा। बट इसके कितने क्वेश्चंस हैं? 71, 72, 73, 74। ये सिंगल वाला कर देते हैं। Secret of success is constancy of purpose, constant dripping well is a stone. Okay, one follows. Single-minded devotion is necessary for achieving success. Yeah, both follow. I'll go to question 70 now. Yeah, अच्छा लग रहा है। Wearing a cricket jersey on different club. Oh, cricket jerseys भी है। Nice. ये इतना easy नहीं है जितना मुझे लगा था। A who wears CSK is between F and G and is facing north. A is between F and G and assume that A is here in F or G. F or G. People wearing KKR, CSK and MI are in the same row. A is wearing the CSK. KKR, CSK, MI. I'll take. अच्छा CSK यहाँ पे है तो KKR and MI. KKR, MI भी यहीं पे होंगे। H is opposite to E, who is the immediate left of B. H is opposite to E, who is the immediate left of B. तो E यहाँ पे आ जाएगा। C. The people wearing GT and SRH jerseys as on the same row. GT and SRH. B is wearing a GT. H is wearing a DD. The person wearing an MI jersey is at one of the ends. MI. इन दोनों में से कोई हो सकता है। E is wearing an LSG. MI. This will be KKR. ओके तो ये कैंसिल हो गया। Okay, so I will have A. ये पूरा मेरा सिनेरियो कैंसिल। There will be A, F और G, F और G, यहाँ पे आ जाएगा E शायद। H is opposite. Shit. H is opposite to E, who is the immediate left of B. तो ये मैंने गलती कर दी, मेरा पहले सही था। F G A, F G H, E B, L S G, C S K, M I, K K R. यहाँ पे H is wearing a DD, M I, K K R. V is wearing a GT and is second to the left RR. बचा हुआ टी शर्ट इज पता नहीं कौन। H is sitting diagonally opposite D, A, B, C. Immediate left of person opposite E, F और G. F और G के बारे में क्या दिया हुआ है? Not given, cannot be determined. Who are the neighbors of B, C, A?
डायरेक्टली ऑपोजिट बी ए, इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के राइट में कोई नहीं है, नो वन. Which person does not sit in the same row as C? A, F, G, H, A. ओके, ये सारे हो गए. ओके, नाउ आई एम रियली टायर्ड, आई गो ऑन टू द एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन, थोड़ा रेस्ट कर लूंगा. और आधा आधा इक्वल, ऑप्शन 4 इक्वल नहीं है. 1 2 3 1, 3 के आगे एक, एक के आगे तीन, तीन के आगे एक, तीन के आगे एक, तीन के आगे एक के आगे तीन वाला गलत है, ऑप्शन 2. 1 2 3 4 5, 1 2 4 3 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऑप्शन 2. राइट लेफ्ट लेफ्ट, 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 ठीक है. राइट लेफ्ट एक छोड़ के, राइट नहीं, राइट लेफ्ट एक छोड़ के, राइट लेफ्ट एक छोड़ के, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, 2 और 3 में से. टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, 2 और 3 मार्क करके आ जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता है. दोनों एक तरफ, दोनों ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट, दोनों सेम, दोनों ऑपोजिट, ऑप्शन 4. 6 4 5, 3 4 5, 5 4 3, 4 5 6, 6 5 4, ऑप्शन है. दो के आगे एक, एक के आगे दो, एक के आगे दो, एक के आगे दो, एक के आगे दो, ऑप्शन है गलत है. 4 3 4 3, 4 3, आंसर ऑप्शन सी. एक बार डी भी हो सकता है ना, पर किधर भी एक्चुअल रेक्टेंगल नहीं है, तो ऑप्शन सी सीम्स बेटर. विच फिट इनटू ईच अदर टू फॉर्म अ कंप्लीट स्क्वायर. स्क्वायर तो नहीं आएगा. लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दीज. स्क्वायर के अंदर इनको फिट करने की ट्राई करता हूँ. अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करूँ, 1 3 5. तो मिल सकता है. नहीं, पर ये आएगा, 2 नहीं आ सकता. ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. 1 ऊपर आ जाएगा, मतलब ये ऊपर है, सामने ये आ जाएगा. हाँ, 1 मिलेगा. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7. ऐसा कैसे? 5 7, 5 7 तो 5 होना चाहिए. 1 2 3 4 5, ऑप्शन ई. बीच में था, लेफ्ट में चला गया. बीच में था. हाँ, बट ऊपर ये डायरेक्शन में है, तो नहीं पता कैसे. व्हाइट ब्लैक सेम रहा, तो ब्लैक व्हाइट सेम रहेगा. बी सी डी. ओ नहीं, ये ऐसा था तो ऐसा हो गया.
तो ये ऐसा है तो इट विल कोइंसाइड। ऑप्शन सी। सी और डी भी हो सकता है, तो डी क्यों नहीं? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है ना। लेफ्ट की तरफ गया तो इसको मैं लेफ्ट की तरफ भेजूंगा तो ऐसा। पर वो लेफ्ट की तरफ गया तो ऊपर चला गया, तो ये ऊपर जाके राइट में जाएगा। नॉट हैपनिंग। आई कैन से ठीक है। आई कांट वेस्ट टाइम ऑन दिस। सी गाइस अंडरस्टैंड, मैं हर हर चीज में राइट होने का ट्राई नहीं कर रहा। कभी कभी कुछ जाएगा गलत, पर मुझे टाइम बचाना है। आई डोंट हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ना। इवन इफ आई स्कोर लाइक 150, एटलीस्ट अगर ये डिफिकल्टी का मॉक है तो 145 पे भी जेबीआईएमएस मिल जाएगा। द पॉइंट इज, अगर ये डिफिकल्टी का सीईटी एग्जाम है तो द पॉइंट इज, मुझे पता है दैट 50 क्वेश्चन भी गलत हुए तो मुझे चल जाएगा। आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद हैविंग 50 क्वेश्चंस आल्सो रॉन्ग। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट मेक श्योर दैट मैं सारे 200 करता हूँ अटेम्प्ट। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये नीचे कर। वाटर इमेज मिरर इमेज, तो वाटर इमेज मिरर इमेज। डी। ये वन में है। ओके। राइट में घुमा के एक शिफ्ट किया, वापस घुमाया दो शिफ्ट किया, वापस घुमाया तीन शिफ्ट किया, वापस घुमाया। ऑप्शन बी बॉम्बे। नहीं, एक मिनट। वापस घुमाया और चार को शिफ्ट कर दिया, तो ऑप्शन सी आएगा। हम्म। 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 सी। ओके। डाउन अप राइट डाउन लेफ्ट, तो लेफ्ट आएगा। ए सी डी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 अप सी। प्लस क्रॉस, प्लस क्रॉस प्लस बैठना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी। चार। हम्म। एक दो तीन चार पाँच। पाँच। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। घुमा दिया। वापस इसको घुमा दिया ना। कौन सी साइड आ रहा है? पीछे की साइड ऐड हो रहा है। पीछे की साइड एक ऐड हो रहा है। पीछे की साइड एक ऐड हो रहा है, तो इसको मैं वापस ऐसे घुमा दूंगा। इट विल बी दैट +1। ऑप्शन डी। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 4 by 4 है। वन स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो 1 + 4 + 9 5 14 14 + 16 30। आंसर ऑप्शन डी। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, वापस देखते हैं। पहले बड़े वाला 1, बाद में छोटा 2 3, उससे छोटा 4 5 6, बाद में उससे छोटा 7 8 9 10। 10 + 6 16। 16 से बड़ा कोई ज्यादा बन रहा है? नहीं, 16। अप डाउन डाउन। नहीं। 3। विच फिगर कंप्लीट्स? ओके, स्क्वायर और बीच में से काटा है। बी बॉम्बे। हम्म। हम्म। ये उल्टा हो गया, तो यहाँ पे भी ये नीचे आ जाएगा। 2 या फिर 4 में से। 2 आएगा। आई एम सॉरी फॉर द यॉन। मैंने ये एक्चुअली टेस्ट सुबह सुबह 7:30 को चालू की थी।
मतलब ना ना नहीं, नॉट 7:30, 8:30, 8:30, 9 बजे। हाँ, उठा था जल्दी आज इसीलिए शायद। इन अ सीरीज ऑफ in a series of figures given which can be grouped into classes, uh, 3, 5, and 7 are in the same class. 1, 4, 8 are in the same class. तो 2, 6, 9 ही बचा है, बराबर है। ओके, अब क्यों जितना बचा हुआ है वो खत्म करते हैं। रवि 3, सीता 2, रवि blends. After 3 days, Sita joins. 9 units हो गए. Sita joins him. Later, after a few more days, Arjun also joins them. Three of them finish the remaining work together. If Arjun ends up painting 30% of the entire wall alone, 10, तो इन्होंने टोटल 5, अगर इसने 9 कर दिया था 11, वॉल फुल्ली पेंटेड। ओके, उनको कितना दिन लगता है? अर्जुन जितना भी काम करेगा, इन हाउ मेनी डेज इज द टोटल वर्क डन? 3, 5, 9, 11, 11 डिवाइडेड बाय 11 divided by 5, 11 divided by 5, 5, 2.2, 3 plus 2.2, 5.2। हाँ, कुछ तो गलत किया है मैंने। Ravi का capacity is 3. After 3 days, Sita joins him. Later, after a few more days. Okay. Arjun also joined them and the three of them finish the remaining work together. Okay, Arjun 10 units का करता है। Sita joins him, but at least for some time. 5.2। अच्छा सॉरी, अर्जुन 9 units of work करता है। These people work 11 units, 11 units at, they work 11 units together। नहीं, they complete 12 units together, तो 5.4 is the answer, बराबर है। Arjun sells a good to customer at a profit of K% over the cost price. Beside, he cheats his customer giving 880 gram only instead of one value। तो 1000 by 880, ठीक है। Thus his overall profit percentage is 25%। Find the value of K। तो हम्म, 5/4। हाँ, वो तो बैठ रहा है, तो मैंने क्या गलती किया? Find the value of K। अब थकान लग रही है। दिस इज वेयर इवन गाइस आई गेट टायर्ड। 48 हुआ है ना, वेट आई ट्राई टू फिनिश एज मेनी ऑफ दीज एज पॉसिबल। लेट्स सी, क्यूए में एकदम जो सिंपल चिंदी वाले हैं, वही वाले सॉल्व करता हूँ, बाकी के बाद में देखूंगा। हाँ, शे 110, 10%। मैं कैलकुलेशन एरर कर रहा था। मैं वही सोचूं यार, ऐसे कैसे? दिस व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर टायर्ड गाइस। तुम लोगों में से बहुत लोगों को पता चला होगा मैंने गलती वहां पे कहाँ की होगी। टू इट वाज रन 100 किलोमीटर पर आवर
crosses another train running in the opposite direction at 80 kilometers per hour, 200 kilometers per hour in 9 seconds. So total speed is 200 into 5 by 18, 2 into 9, 2 into 100, 500 by 9, 55.55 meters per second, 9 seconds. अच्छा इंटू 9 तो 500 meters, तो दोनों का लेंथ सेम है. The length of the first train shrinks by 3/4 of that. Shrinks by 3/4 of that of the other train. हाँ तो obviously the length of the other train is going to be higher. बराबर है. ओह फुल सी डिग्री चालू है. एलआर में डीआई डाल दिया. ऐसा गूगली सीईटी डालते वैसे मेरी टीम ने भी डाला है. नाइस. Total number of children 5800. Total number of children attending schools 3600. Personally breakdown number of children in 5 different villages and personally breakdown of those attending schools from that villages. ठीक है. ठीक है. Total of children not attending school from villages 2 and 3 together. Okay. Village 2 and 3 में कितने हैं? 24, 11, 35. 35% of 5800. 35 into 58 minus not attending 2, 8, 8, 42. 42% of 36. 42 into 36. 36, 5 by 5, 35, 35, 5, 5, 5, 7, 250, 290, 290 into 7. 290 into 7, 0, 63, 36, 14, 20, 2030 minus 42, 36, 6 to 1, 24, 24, 6, 30, 31, 3, 1512. 1512 is 5. यहाँ पे कितना 630 है. 518. The number of children attending school from village 1 is approximately what percentage of the number of children of that village? So 15 into 36 divided by 16 into 58 into 100. 4 into 9, 4 into 4. 15, 5, 5, 5, 5, 13, 13 नहीं जा रहा है. तो 4 into 3.75 56, 3.75, 58, 9, 15, 10, 135 by 58, 4, 4, 4, 2, 232. 232 में से 135, 135, 130, 232 में से 135, 115, 115 से 20 ज़्यादा, 115 से 8% ज़्यादा, तो 58, 58 अप्रोक्सीमेटली. अरे जोरदार. What is the approximate average number of children not attending school from 2, 3 and 4 together? Not attending. Oh my god, बहुत सारा कैलकुलेशन है इसमें. Not attending school. बहुत कैलकुलेशन है, छोड़ो. The number of children not attending school from village 4 and 5 is approximately what percent of the total number of children from 4 and 5 together not attending school? तो चलो कैलकुलेट करना पड़ेगा. 2, 2, 2, 18, 49, 49, 58. 49 into 58 are the total number of people. So 58 into 50, that is 2900 minus 58. 2842 is the total number of students, जिनमें से कितने अटेंड कर रहे हैं. 43 into 36. 43 into 36, 36, 8, 1, 9, 9, 24, 33, 34, 3, 12, 1, 5, 4, 8. What percentage of total number of children from 4 and 5 together? Okay, तो ये कितना परसेंटेज बनता है?
कितने अटेंड नहीं कर रहे? 1 15 13 -6 1294 डिवाइडेड बाई 2842 इंटू 100। इसका 50% से कितना कम? 50% विल बी 1421। 1421 में से कितना कम है? 1421 में से 222 21 21 ऐड कर देंगे। 6 200 200 -6 194 194 प्लस 21 215 215 कम है। 215 is not even 10% of this. 215 is 28 28 में से 7, that is 7 by 10 77%। 50% minus 7 43। 43 से ज़्यादा या कम? 42.5 दोनों में से एक होगा, मैं मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। What is the ratio of total number of children from village 4 to the number of children attending school from the same village? Total number of children from school 4, village 4, sorry. So 18 into 58 divided by total number of children attending school from the same village. So 21 into 36. 6 into 3, 6 into 6, ये हो गया into 2, 7, 58 by, नहीं, 29 by 21. Hmm. A cyclist riding on a misty morning overtakes a jogger who is running at 5 kilometers in the same direction. The jogger manages to keep the cyclist in sight for 8 minutes before the mist hides him completely. If the jogger could see up to a distance of 0.4 kilometers, what is the speed of the cyclist? Okay. Oh wow, I love the question. The cyclist riding on a misty morning. First of all, देखते हैं मेरे कितने क्वेश्चंस हुए हैं। 30 30 48 78 78 प्लस 49, वन 128 127 प्लस 25 152 152। 30 मिनट्स बाकी है। 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, सारे के सारे मैं करने भी नहीं वाला। अप्रोक्सीमेटली 180 अटेम्प्ट्स इज अ गुड इनफ नंबर टू रीच दैट। ओह नहीं, सॉरी, माय बैड। A cyclist riding on Mr. One notice a jogger running at 5 kilometers per hour in the same direction. Sight for 8 minutes. अच्छा, जॉगर का स्पीड है 5, साइक्लिस्ट he could see up to a distance of 0.4 kilometers. 8 मिनट 8 मिनट के बाद he crossed a 0.4. So 8 मिनट में 0.4 किलोमीटर कवर हुआ, तो रिलेटिव स्पीड if 8 is 0.4 then 60, 24 by 8 3, तो 3 किलोमीटर कवर होगा। तो his relative speed is 358. Answer option C. Two cyclists are racing a circular track. LCM is the number of meters of each completed race is 1980. Their HCF is 11. Both cyclists cover the distance not more than 3 digits. What is the sum of their individual lap lengths? It's just all not this question.
इस सब इंटू डेल भी होने वाला है। What is the sum of their individual lap lengths? Hmm. 33 into 5, 165, 33 into 4. Okay, 33 into 5, 165, and 33 into 4, 120, 120, 132. वो 87 आ सकता है। 297, ये है आंसर। Really nice question. I'll compliment my team for that question also. Two co-prime natural numbers have LCM of 84. The product equals the LCM in the sum is. Okay, ये individual questions है ना? Plus 1 plus 8, 1, 8, 27, 64, 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube ऐड किया, 5 cube ऐड करेगा 125, 240, 230, sorry. 2 as the average age of a family of 6 members was 18. 18 into 6, 6108. अभी 12 से बढ़ गया तो 120 है. The family, if a family friend is included, the average age of the family will be the same as the present average age. Okay, so the family friend is 12 years old. If two balls are drawn at random, to that both balls are either black or red, probability time लगता है solve करने को. Two co-prime natural numbers have LCM of 84. Okay, if the product equals their LCM, वो तो होगा ही क्योंकि co-prime है. Sum is less than 50, which of the following cannot be the sum of these two numbers. 84 को फैक्टराइज कर देते हैं. 4 2 square into 1 into 21, so and into 7 into 3, so and these are co-prime, तो I'll have to take 4 28 28 and 3 हो सकता है. नहीं तो it can be 4 into 3, 12 into 7 हो सकता है. 21 into 4 हो सकता है. तो the sum can be 31, the sum can be 19, the sum can be 25. 29 सम नहीं हो सकता कोई भी तरीके से. 29 भी शायद आ ही जाएगा, 13 तो नहीं ही आएगा. सेट बेस्ड, एलआर का सेट बेस्ड खत्म करता हूँ पहले. How many consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a number but not followed by a number, not followed by a letter? कॉन्सोनेंट पहले नंबर है तो के, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर है. बी, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर है. एफ, या तो 3. PQRST family, 2 generations, there are married couples in the, 3 married couples in the family. The only son of R is the husband of U,
and brother-in-law of P, कोई तो है जिसका husband wife P है. U has no other siblings. S is the daughter of T, who is the wife of Q's father. S is the daughter of T, who is the wife of Q's father. तो मिल गया. हॉस्टी रिलेटेड टू पी मिल गया. फर्स्ट वाला दे रहा है. The only daughter of R is the sister-in-law of U. The only daughter of R is the sister-in-law of U and the wife of P. Q is the son of T and the brother-in-law of P. Who has no siblings. Son of T. फर्स्ट वाले में मिलेगा क्योंकि टी का जेंडर पता है. Sorry. A, B, C, D, E, F, G placed in a straight line facing towards the north but not in the same order. Each one is different. F is placed on the immediate right of B but none of this is placed at the end of the row. B के बाजू में F है. ये गारंटी है. Only 3 cages between B and the cage which has cheetah, which is placed at one of the ends. Okay. तो B dash 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 यहाँ पे cheetah and यहाँ पे F. शायद this is 1 या फिर cheetah 1 2 3 यहाँ पे B and यहाँ पे F. And 1 2 3 4 5 6 7 होगा. नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा. A is placed adjacent to the cage which has cheetah. The cage which has bull is placed exactly between A and E. तो ये आएगा. Line. डी और जी दोनों में चीता नहीं है तो डी जी यहाँ आ जाएंगे. यहाँ पे सी आ जाएगा. एंड देन हैज द चीता. ए रिलेटेड टू चीता इमीडिएट राइट adjacent exactly between A and E. Bull. How many cages placed to the right of cage B? 1 2 3 4. जीरो वाला ऑप्शन नहीं है. Has exactly 2 cages between them. तो ये ढूंढना पड़ेगा. चलो. The cage which has fox is placed second to the right of the cage which has rhino. F doesn't have tiger. तो इधर D ले लेते हैं because that is what I got from the options. As many cages placed to the right of D as to the cage left of the cage with lion. 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 यहाँ पे lion आ जाएगा. DG चीता नहीं है. Only 2 cages placed between cages which are lion and rhino. Rhino. Cage which fox is placed second to the right of cage which has rhino. Only 2 cages are placed between. अच्छा तो fox second to the right. Fox. F doesn't have tiger. यहाँ पे टाइगर आ जाएगा. एंड लायन टाइगर चीता बुल फॉक्स जीब्रा. तो Z F हैज जीब्रा. तो ये ऐसे मेरा पूरा डायग्राम मुझे मिल गया. द सेकंड केस इज व्हाट आई एम हिंटिंग एट. ये जो सेकंड वाला नीचे वाला केस है ना, दैट इज माय आंसर. विच टू एनिमल्स एग्जैक्टली 2 केजेस बिटवीन देम. लायन टाइगर के बीच में एक पर्सन है. राइनो फॉक्स के बीच में एक है. लायन राइनो के बीच में 2 है. राइट. बुल फॉक्स के बीच में कुछ नहीं है.
तो या दिस इज डन। 63 मार्क फॉर रिव्यू तो नहीं है। ओके, दिस इज द पजल। Okay, all of them are facing the center, then I will do this। ये वाला कौन सा है? 6 person sitting in a triangle, all of them are facing towards the center। 6 ही लोग हैं तो ट्रायंगल में प्लेस कर देता हूँ। सब अंदर देख रहा है। थोड़ा और बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सब अंदर ही देख रहे हैं तो आई डोंट नीड टू पुट एरोज ऑल्सो। The one who lives in Charlotte sits at the corner of the table। 3 persons sit between Charlotte and T। 1 2 3, तो यहाँ पे T आ जाएगा। Who sits to the immediate left of the one who lives in Castle? The position of the one who lives in Charlotte, Charlotte ही है ना? हाँ। One who lives in Charlotte and T। एक मिनट। O sits second to the right of the one who lives in Castle। O। The position of the one who lives in Charlotte with respect to T is the same as the position of P with respect to O। एक मिनट। The position of one who lives in Charlotte with respect to T। ओके, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है मेरी। लेट्स रीस्टार्ट, वरना बिगड़ेगा वापस, कुछ ना कुछ बिगड़ेगा। सो गाइस यू विल सी दैट नाउ मेरी गलतियां ज्यादा होने लगी। आई एम फीलिंग मेंटली टायर्ड, तो नाउ आई विल टेक इट स्लो। मैं ज्यादा भागूंगा नहीं। 3 persons sit between the one who lives on Charlotte and T। Charlotte कहाँ पे रहता है? Charlotte sits at corner। यहाँ पे T रहता है, क्योंकि नहीं, 3 persons बिटवीन देम दिया हुआ है, 2 persons बिटवीन देम नहीं दिया है। तो T यहाँ रहेगा, नहीं तो फिर यहाँ से 3, नहीं तो यहाँ से 3, तो T will be here। T will be at either of these 2 places। T lives immediately left of the one who lives in Castle। O lives second to the right of one who lives in Castle। T lives immediate left। ओके, आई विल मूव ऑन विथ वन केस। गलत हुआ तो वापस आ जाऊंगा। मैं ले लेता हूँ टी को यहाँ पे। Who sits second to the right of, नहीं, T who sits immediate left of one who lives in Castle। O sits second to the right of the Castle। The position the position of one who lives in Charlotte with respect to T। Charlotte with respect to T मतलब second to the left is the same as P with respect to O। तो second to the left, तो यहाँ पे P आ जाएगा। Who sits to the immediate left of S। S के लेफ्ट में बैठता है, तो ये कैंसिल, ये गलत हो गया। तो T वहां पे ऊपर चला जाएगा। immediate left of the one who lives in Castle। Charlotte with respect to T, second to the right। O sits second to the right of one who lives in Castle। The position of one who lives in Charlotte with respect to T, second to the right, is the same as P with respect to O। तो P यहाँ आ जाएगा। Who sits to the immediate left of S, S यहाँ पे आ जाएगा। The one who sits second to the right of S lives in a cave। T cave में रहता है। And is one more than the number of person between the one who lives in cave and S is one more than the number of person between R and one who lives in igloo। R and igloo बाजू बाजू में है, तो R has to be here and this will be igloo।
एंड काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ बोथ एस एंड आर। ओके बराबर है। क्यू लिव्स आइदर इन विला और कैसल, तो क्यू हैज टू बी हियर। अच्छा, क्यू लिव्स नाइदर इन विला नॉर कैसल। ये गलत हो गया, आई हैव टू डू दिस अगेन। गलती हो रही है पर भगा के फायदा नहीं है, वरना और गलती हो जाएगी, जितना आ रहा है उससे भी कम आएगा। तो लेट्स नॉट डू दिस। द वन हू लिव्स इन चाइल्ड सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। टी और उसमें तीन लोगों का फर्क है, तो ये तीन के बाद यहाँ पे टी, who sits immediate left of the one who lives in castle, who sits second to the right of one who lives in castle. The position of one who lives in chalet with respect to T, second to the left, is the same as P with respect to O. P यहाँ पे आ जाएगा. Who sits immediate left of S? O sits immediate left of S. The one who sits second to the right of S lives in a cave. The number of persons between cave and S, मतलब वन का फर्क. R and igloo. R यहीं पे आ सकता है एंड ये igloo आ जाएगा. Q lives neither villa nor castle, तो Q यहाँ पे आएगा, विला यहाँ पे आएगा, तो Q lives in पैलेस. हो गया मेरा. टी ग्लो Q. अच्छा, टी के सामने इग्लू है, आर के सामने कैसल. हाँ. आर के बाजू वाला कैसल है. क्यू के टू टू द लेफ्ट इग्लू है. टी के थ्री टू द लेफ्ट इग्लू है. क्यू के फोर टू द लेफ्ट कैसल है. तो किसी के तो फाइव टू द लेफ्ट होना चाहिए. आर के फाइव टू द लेफ्ट, वन टू थ्री फोर फाइव, आर इग्लू आना चाहिए. आर क्यू टी क्यू. ओके, फिफ्थ टू द लेफ्ट. ओके, फिफ्थ टू द लेफ्ट में वन टू थ्री फोर नहीं. पी इग्लू नहीं आएगा. टी वाला वन टू थ्री फोर, हाँ तो आर इग्लू परफेक्ट है. दिस टुक अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, by the way guys. On the following sits second to the left of Q, O igloo O. On the following lives in the palace Q, third to the left of P. नहीं, O नहीं, तो one sits second to the right of O बराबर है. Which of the following statements are true with respect to the final arrangement? True with respect to the final arrangement. Both T and the one who lives in palace lives at the corner of the table. नहीं. More than one person sits from the right of P to the one who lives in igloo. More than one person sits from the right of P to the one who lives in igloo. गलत. Neither Q nor the one who lives in villa are adjacent to S. नहीं, Q's. The one who lives in cave sits fourth to the right of O. वन टू थ्री फोर, ये सही है. नहीं, वन टू थ्री, सॉरी फोर्थ नहीं, third to the left. None of these are true. Which of the following is immediate left of P live? Cave. तो ये भी मार्क फॉर रिव्यू हटा देता हूँ. I'll just see singular questions which can be solved. अब सेट सॉल्व करने का मेरे पास टाइम नहीं है. मैं फाइनल एग्जाम के एंड में तुक्का मार के आऊंगा इन द रिमेनिंग सेट्स. तो आई हैव थ्री सेट्स हियर जिसमें मैं तुक्का मारूंगा. यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे जिनमें मैं तुक्का मार दूंगा. क्यूए रिलेटिवली आई हैव सॉल्व्ड लेस. ओके ठीक है, तो क्यूए टर्न्स आउट इसमें थोड़ा सा टफ है. लेट्स सॉल्व द वर्बल, बाद में क्यूए पे जाएंगे क्योंकि वर्बल जल्दी हो जाता है मेरे साथ.
एंड गाइज रिमेंबर दैट मेरे पास 2 ही मिनट है, मैं 5 मिनट एंड में बची होती है वो तुक्कों के लिए दे देता हूँ, सो आई डोंट मार्क फ्लूक्स व्हेन आई एम सॉल्विंग अ मॉक टेस्ट। सीईटी के टाइम कर दूंगा, बट वो अभी उससे मेरा कुछ स्कोर इंक्रीज नहीं होने वाला है। एंड मेकिंग अ गुड एट आस्किंग a Socratic method, which is itself at the core of scientific method, popularized by Bacon. Socratic method disproves arguments by finding exceptions to them and can therefore lead your opponent into a point where admit something that contradicts their original position. In common with Socrates, Bacon stressed it wasn't important to disprove a theory as it was to prove one, and real-world observation and experimentation were key to achieving both aims. Bacon also saw science as a collaborative affair. The scientists working together challenge each other. Advocated clever questioning of opponents to disprove their arguments. Option D, I feel, is right. I have 35 seconds. Let's see. अगर क्यूए का कोई भी सॉल्व हो सकता है तो इसमें हमने बहुत outcomes assist that at least one dice shows number 3. हाँ तो 3 and 2 ones. एक 3 आ जाएगा, at least one die shows 3 and with 2 1 6 2 something. नहीं, ओके, आई विल सबमिट द मॉक बिकॉज 5 मिनट ही बाकी है। लेट्स सी कितना आ जाता है। 99.7%, I'll score a 136. A real kudos to the person who scored 154. Very good. I think I'm the 10th topper here. Let's see my sectional analysis. I'll just close the OneNote. So 136, I'm not saying that बहुत अच्छा स्कोर है। I'm clearly out of practice. It shows very much. मेरे इजी में 12 क्वेश्चंस गलत थे एंड मेरे मीडियम में 38 क्वेश्चंस रॉन्ग थे। लेट्स सी टाइम वाइज एनालिसिस। मैंने मीडियम लेवल क्वेश्चंस में 21 मिनट्स ऐसे क्वेश्चंस में डाले जो मैंने गलत कर दिए थे। आई नीड टू फिगर आउट दीज इधर मैंने कहाँ गलत किया था। डोंट वरी, एबीसी एनालिसिस विल टेल मी एवरीथिंग। मुझे ये सब, नाउ दिस इज द एनालिसिस दैट यू गेट एवरीवेयर। तुम्हें हर जगह पे ये एनालिसिस मिलता है, राइट? हार्ड में मैंने 3 मिनट ही डाले, सो माई रिकॉग्निशन ऑफ हार्ड क्वेश्चंस वाज रियली गुड। दैट मैंने हार्ड क्वेश्चंस में जो टफ वाले थे, मीडियम क्वेश्चंस इज वेर आई फॉल्टर्ड, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी। ऑब्वियसली आई सी दैट कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से मैं और अच्छा कर सकता था, बट इजी क्वेश्चंस में मेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छा था। आई डेंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। इजी में 48 मिनट्स में मैंने 61 क्वेश्चंस इजी सॉल्व कर दिए, दैट्स वेरी गुड। बट ये जो 12 गलत किए, 12 गलत को मैंने 8 मिनट दिए, स्टिल नॉट बैड। 136। लेट्स लुक एट मीडियम। मैंने 51 मिनट्स में कितने सही किए? 51 मिनट में 67। मेरा मीडियम में एक्यूरेसी उल्टा ज़्यादा अच्छा था। एंड 38 जो मैंने गलत किए, मैंने उनके लिए 21 मिनट्स डाले। ओके, तो एटलीस्ट गलत को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। बट द 9 क्वेश्चंस विच आई लेफ्ट, उसको 1 मिनट 10 सेकेंड्स ही। तो माई टाइमिंग वाइज आई फील लाइक आई एम डूइंग एक्सट्रीमली वेल। जैसा टाइम देना चाहिए था मैंने वैसा ही टाइम दिया है। हार्ड मैंने 8 सही किए और एक गलत किया। 8 सही करने के लिए मुझे 7 मिनट लगे एंड एक गलत, यस, जो मैंने गलत किया उसको 3 मिनट्स 21 सेकेंड्स दिया। दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। मुझे देखना पड़ेगा कौन सा वो हार्ड क्वेश्चन था जो मैंने गलत किया और उसको मैंने 3 मिनट्स 21 सेकेंड्स दे दिए। लेट्स गो टू द नाउ ऑल ऑफ दिस। ये सब तुम्हें हर जगह पे मिलता है। आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू व्हाट एबीसी एनालिसिस मींस बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस इन दिस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट। मैंने ये जो सारे क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे मैं अगली मॉक टेस्ट में, द नेक्स्ट मॉक टेस्ट दैट आई टेक, आई विल राइट दिस डाउन। मैं ये टॉपिक्स को सबसे पहले सॉल्व करूंगा। आई विल मेक श्योर दैट मैं ये टॉपिक सबसे पहले उठाता हूँ, सो दैट इन दी स्टार्ट मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। आई अज्यूम दैट यू गाइज वुड हैव हर्ड दैट मैंने कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं स्किप कर रहा था सेक्शन, सो दैट जो जो मेरा सही हो रहा है वो फटफट होता जाएगा एंड मेरा एनीवे 1.5 घंटे बाद थकान लगती है। यू गाइस सॉ दैट विद मी, राइट? तो तब तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस वाला टॉपिक तो होगा ही नहीं सॉल्व। सो इट डज नॉट मेक सेंस।
देन वी कम टू द बाद में करो। दीज आर द टॉपिक्स विच आई विल टेक इन द सेकंड राउंड नेक्स्ट टाइम। ज्योमेट्री हो गया, पार्टनरशिप मिक्सचर्स हो गया, इनको मैंने शायद ज्यादा टाइम ले लिया था, या फिर अगर कम टाइम में भी किया तो फिर मैंने इसमें थोड़ी गलतियां कर दी थी, मेरा एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं था। एंड फाइनली छोड़ दो, दीज आर टॉपिक्स वेर आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम, या फिर मेरा एक्यूरेसी बहुत कम था। लेट्स सी हियर, उसका और इन डिटेल मुझे ये मिल जाएगा, फास्ट एंड रॉन्ग, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, डीआई के स्लिट्स। डीआई के स्लिट मैंने गलत, हाँ डीआई के स्लिट क्योंकि मैंने सॉल्व ही नहीं किया था। एलआर टैबुलर, एलआर मिक्स्ड पजल्स एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मैंने गलतियां की है, दैट मीन्स लेट्स सी वेयर इट इज। मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज फास्ट तो किया था। ओके, तो मैंने उसमें गलतियां भी की है, आई हैव डन दैट फास्ट एंड राइट ऑल्सो, बट मैंने उसमें गलतियां भी थोड़ी बहुत की है, तो आई विल हैव टू चेक वो किस हिसाब से है। सॉरी अबाउट दैट। Slow and right, okay, I was slow at TSD, I was slow at time and work logarithm. तो now if I were a student, अगर मैं ये पढ़ाई करने बैठता था, then always understand that how will I study। ये जो टॉपिक्स है, इन सब पे मैं वापस जाके बुक में से सॉल्विंग करूंगा, स्लो एंड राइट, फास्ट एंड रॉन्ग। ये टॉपिक्स मैं वापस बुक उठाऊंगा क्रैकेविटीज की, आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बिकॉज मेरा इनका शायद बेसिक अनक्लियर है। मैंने बेसिक मिस्टेक्स की, बहुत सिली मिस्टेक्स की होंगी, मैंने शायद गलती कर दी होगी। फास्ट एंड रॉन्ग मतलब मैं जल्दी सॉल्व करने गया, बट इफ आई वुड हैव गिवन इट मोर टाइम तो मैं उसको सॉल्व सही कर जाता था। आई नीड टू प्रैक्टिस दीज, ये दोनों क्वेश्चंस जो रॉन्ग वाले हैं मुझे वो बुक में से सॉल्व करना है टू इंक्रीज माई एक्यूरेसी। फास्ट, स्लो एंड राइट, इसका मतलब मेरा इसमें एक्यूरेसी अच्छा है। आई नीड टू ओनली लर्न द ट्रिक्स। इसके लिए ट्रस्ट मी, व्हाट वी हैव अ न्यू कोर्स कमिंग अप, स्कोर मैक्सिमाइजर, दैट इज ओनली टू टीच यू द ट्रिक्स फॉर दीज टॉपिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स के ट्रिक्स तुम्हें पता चलेंगे तो तुम इनको भी फास्ट एंड राइट में डाल लोगे। अगर ये फास्ट एंड राइट में चला जाएगा तो तुम्हारा टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो तुम फास्ट एंड रॉन्ग को दोगे, तो फास्ट एंड रॉन्ग तुम्हारा स्लो एंड राइट में चला जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ेगा, तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू। बाकी तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। इफ यू जस्ट फॉलो दिस, तुम्हें एग्जैक्ट पता चल जाएगा तुम्हें किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, तुम्हें किस हिसाब से अगली मॉक में परफॉर्म करना है। Are you understanding? So yeah, great mock test. I would say I am a bit out of practice. मेरा MPM देख लेते हैं। Yes, my QA का MPM dropped a lot. मैंने बहुत टाइम डाला और बहुत कम स्कोर लेके आया, which is really shocking. Normally मेरा QA सबसे बेस्ट होता है। लॉजिकल रीजनिंग आई डिड अ वेरी गुड जॉब देयर। सो बेसिकली मेरा स्कोर गिरा है ओनली बिकॉज ऑफ माई क्यूए सेक्शन। क्यूए सेक्शन में अगर मेरा स्कोर नहीं गिरता, आई एम डूइंग वेरी वेल इन दी अदर थ्री। वर्बल में फिर भी ठीक है, मेरा एमपीएम अच्छा खासा है, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट द परसेंटाइल। माई क्यूए का स्कोर ड्रॉप इज व्हाट कंसर्न्स मी। एब्स्ट्रैक्ट रियली गुड, लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो रियली गुड। So yeah, that is what I need to look at. I will go back and revise my QA, which I don't know why I did wrong. Normally I'm like really good with it. So yeah. So guys, I just a minute, ये बहुत अजीब सा लग रहा है with the filter. Yeah. I hope you guys actually learned कि कैसे एग्जाम को सॉल्व करना है। पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करना ऑब्वियसली अ ह्यूज टायरिंग टास्क। दिस वाज द फर्स्ट मॉक ऑफ माय एंटायर सीजन, तो शायद नाउ आई रियलाइज मुझे मॉक्स की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज आदत छूट गई है। एक साल बाद मैंने सीधा ही मॉक टेस्ट दिया है। तो या, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, यू गाइज गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। इफ यू नीड एनीथिंग देन प्लीज डू रीच आउट टू अस। कमेंट्स में डाल दो तुम्हें जो भी बोलना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ देर इज एनीथिंग दैट यू रिक्वायर फ्रॉम मी देन प्लीज रीच आउट। वी हैव द स्कोर मैक्सिमाइजर कोर्स कमिंग अप टू टीच यू ऑल द ट्रिक्स। जो जो भी मैं यूज करता हूँ वो सारी की सारी ट्रिक्स तुम्हें पता चल जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द पेपर एक्सट्रीमली फास्ट। चलो, बाय एवरीवन, आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड आई होप यू गाइस डू एक्सट्रीमली वेल। बाय।